Oh, can we have some loud noise? Good evening, everybody. Okay. In last 13 years, I would have mentored more than 400 organizations, business owners, in order to achieve the goals of their organization to their God-given potential, out of which 250 plus organizations and 700 business owners are holding partnership firms. So मैंने लास्ट 13 साल में ये डिस्कवर किया है कि एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराना सबसे आसान है, जबकि वो सबसे मुश्किल लग रहा है. सो मैं एक केस स्टडी के फॉर्म में नेक्स्ट 8 मिनट में एक केस स्टडी रन करूंगा. देयर आर 2 जेंटलमैन, मिस्टर आई, मिस्टर यू. लेट्स अंडरस्टैंड दैट वे. मिस्टर आई एंड मिस्टर यू, they have decided to form a partnership firm, and they have just reached out to me how they can have this association and absolutely successful and meaningful. So what my advice would be to them, I have presented here. How many of us here are solo entrepreneurs? Please raise your hand. Solo means एक ही director of the company, no partners. Great. How many of us are running partnership companies here? Okay, good number of hands. Okay, let's look at it. Oh, sorry. Okay, so my first advice to them would be, let's remember, individually we are one drop, together we are an ocean. One thing is for sure, it doesn't matter what kind of knowledge, what kind of skills, what kind of competencies, what kind of attitude, what kind of behavior, what kind of mindset you have as an individual, but you are not going to create a history, or you are not going to create a magnificent enterprise out of it till you do not collaborate in some way. So let's look at it. There are 3 types of entrepreneurs: solopreneurs, collaborations, and partnership organizations. So my advice to Mr. I and Mr. U is, पहले तो तुम ये समझ लो कि collaboration और partnership में फ़र्क क्या है. Because जब मैं पार्टनर्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ये कर लिया, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ वो कर लिया, वो मुझे नहीं समझा, ये मुझे नहीं समझा, मैं उसको नहीं समझा, उसने मुझे चीट किया, मैंने उसको चीट किया, वो मुझे नहीं समझ पा रहा है, एंड ऑल स्टोरीज. अच्छा, मज़े की बात ये है कि व्हेन वी हियर द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, इट्स द सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो. एंड व्हेन वी मेक देम असेंबल टुगेदर, वी विल बी कन्फ्यूज्ड. So what exactly let us understand fundamentally what is the difference between collaboration and partnership. So solo entrepreneurship is all about I and you. मेरा एक business है, किसी दूसरे का एक business है. We all are working, we both are working independently, we are fine. This is solo entrepreneurship. Now look at here. They both are independent. Just look at this common part, which is we. Now till that we is a common objective, rest all is independence. Let us understand very clearly. मतलब एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से, या एक एंटरप्रेन्योर दूसरे एंटरप्रेन्योर से इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर रहा है, रेवेन्यू शेयर कर रहा है, कुछ भी चीज़ शेयर कर रहा है विद सम कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एंड दे हैव मूव्ड इनटू द सम काइंड ऑफ एन एसोसिएशन. दिस इज कॉल्ड द कोलैबोरेशन. In collaboration, both I and you are independent other than the objectives which we are figured out in we. Other than we objective, they both are absolutely independent to have their own choices. Now what is partnership? Now this is called partnership. Now what is the difference between this figure and the previous figure? Let me open up once again. Now you understand what has been done here is your freedom and your choices have been restricted by that red border, which is a border of organization. Let me go back again. Oh. Sorry. How can I go back? Okay. So here, there is a lot of freedom. Here,
The freedom is been given to the orange border, which is a border of an organization. Now, organization is set of people, process, system, climate, culture, vision, mission, goals, and values. You cannot have your own choices, you cannot have your own decision making because everything has been restricted here. So let me tell you very honestly, बहुत सारे partners हैं जो काम collaborators की तरह कर रहे हैं और बहुत सारे collaborators हैं जो एक दूसरे से expectation partnership की तरह कर रहे हैं. That's where their expectations go wrong. And because their fundamental expectations go wrong, irrespective of that knowledge, skill, attitude, and communication, eventually business struggle. Now let us understand few collaborations in history. So collaboration is not an attitude, collaboration is not behavior, collaboration is not philosophy. If we see, nature is the biggest example of collaboration. What we inhale, someone exhales. वहाँ से ही हमको collaboration का message दे दिया था. If we check history and nature, there are series of examples of collaboration. We know, victory of truth also has happened because of the collaborations. Self-explanatory. Even World War II, lots of collaborations. Constructive way or destructive way, whichever way it would be, but lots and lots of collaborations. So let's understand one together. Coming together is a beginning, keeping together is a progress, and working together is a success. That would be my message to Mr. I and you, first of all. That alone you will not be able to do anything. First you understand the difference between what partnership is, what collaboration is, and then decide what kind of a journey you would like to board. I would also like to make them understand about certain, नहीं बोलते हैं कि you don't need to reinvent the wheel. We don't need to reinvent the wheel. Wheel is already been invented. So, not necessarily all meaningful lessons of life has to be learned in hard way. There are people who have made miserable mistakes. Let's learn out of them. So, what kind of mistakes people have made? So, I will be very straight, very blunt. Few of the examples are from healthcare industry itself only. ऐसे भी partnerships टूटते हैं. तुम्हारा ऑफिस मेरे ऑफिस से बड़ा क्यों? तुम्हारा वर्किंग आवर मेरे वर्किंग आवर से कम क्यों? हम लोग इतना सारा पैसा कंपनी में डाल रहे हैं, बैंक में तो कुछ आ ही नहीं रहा है. माई पार्टनर इज वर्किंग लेस, बट मैं तो 10 घंटे में ही प्रोडक्टिविटी निकाल दे रहा हूं. एक को प्रॉब्लम है कि तू कम काम कर रहा है और एक को प्रॉब्लम है कि मैं कम काम कर रहा हूं और ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल रहा हूं. हाउ टू सॉर्ट आउट दिस डिबेट नाउ? पार्टनर ए बोलता है माई पार्टनर बी इज नॉट कॉम्पिटेंट, पार्टनर बी बोलता है माई पार्टनर इज नॉट ट्रांसपेरेंट. अब कॉम्पिटेंसी और ट्रांसपेरेंसी का डेफिनेशन कैसे निकालेंगे? तुम्हारा तो मल्टीपल बिजनेस है, मेरा तो माइंड बॉडी और सोल पूरा एक ही बिजनेस में लगा हुआ है. आई होप यू कैन रिलेट ऑल दीज एग्जाम्पल्स. अच्छा, एक पार्टनर को इसलिए प्रॉब्लम है कि फैमिली मेंबर का जरूरत से ज्यादा इंटरप्शन है कंपनी के अंदर. ही सेज दैट your wife is coming and interrupting and that is impacting a lot to the culture of the company. So these are some of the examples started from there and turned into a very disaster partnership. Now my advice to them is, इससे problem क्या होता है? Lot of peace, loss of peace, loss of quality of life, lots of money problem, economy sink, many things are happening. In Ahmedabad, multiple hospital projects are there because of the dispute of partnership. It's a crores worth of a loss of money and it's a quality of life loss also. Follow these simple 10 steps to Mr. I and you will make a great partnership. So my last slide would be, without red, you cannot move ahead. Red is a fundamental, green is the primary. So primary में 3 स्टेप है. सोलो वर्सेस कोलैबोरेशन वर्सेस पार्टनरशिप का अंडरस्टैंडिंग सबको क्लियर होना चाहिए. मिस्टर आई को मैं बोलूंगा कि यार पहले तू मुझे पेपर पे प्रूव करके दिखा कि तुझे पार्टनरशिप में या कोलैबोरेशन में जाना क्यों है. और तू मिस्टर यू से पार्टनरशिप करना चाहता है तो उसको भी पूछ के तुझे पार्टनर ऐसा तो क्या ही हासिल कर लोगे दोनों मिलके जो इकट्ठा नहीं अकेले में नहीं कर सकते हो. लेट्स राइट डाउन ऑन पेपर.
डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल पार्टनरशिप। जब डिस्कशन करने बैठते हो तो कोई डिस्कशन का पॉइंट लिखा हुआ नहीं होता है एंड दिस इज एन एंडलेस डिबेट। ग्रीन आर द सेकेंडरी इंपॉर्टेंट थिंग। आस्क योरसेल्फ दैट आई एंड यू इंजॉय ईच अदर कंपनी। अगर काम साथ में ना भी करो तो एक दूसरे के साथ कंपनी इंजॉय कर रहे हो। जिसका कंपनी इंजॉय नहीं कर रहे हो उसके साथ काम लंबा कैसे करोगे? Absolutely clarify what goals, what roles, what responsibility and what ownership matrix of each partner. I always believe reasons can be debatable, results should not be debatable. You should run organization in this way that your reasons can be debatable but results and ownership cannot be debatable. नॉन नेगोशिएबल पर्सनल वैल्यू कुछ है तो पहले ही डिक्टेट कर दो, पार्टनरशिप करने के बाद नहीं। मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ और कंपनी में खाने भी नहीं दूंगा। अगर आपका ये पर्सनल वैल्यू, आई एम नॉट अगेंस्ट वेज और नॉन वेज, बट इफ दिस इज द पर्सनल वैल्यू विच यू वुड लाइक टू कम्युनिकेट अप फ्रंट। पार्टनरशिप, फाइनेंशियल टर्म्स एंड क्लैरिटी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादातर लोगों को तो फाइनेंशियल क्लैरिटी नहीं है कि फाइनेंशियल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना कैसा चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ विजन एंड रोड मैप, शेड्यूल्ड रिव्यू, 3 महीने में एक बार शेड्यूल रिव्यू करो, जो बोलना हो बोल दो। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, अगर 3 महीने में एक बार ओपन और ऑनेस्टली कुछ बोल दिया तो 1 साल के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं फेस करना पड़ेगा। एंड लास्ट इज celebrate the success and attitude of gratitude. Let's understand smallest of the smallest success should be celebrated, and that time let's say thank you to the other person because of your contribution we have reached to the point. Follow these 10 points, it will surely be a successful partnership. These 10 points will not be executed if the red one is not followed, which is empathy. Let's understand, you are building a partnership with a person who is having a high level of ego, and empathy is seeing with the eyes of another, this is my last quote, listening with the ears of another, and feeling with the heart of another. If you cannot do this, partnerships and collaborations are not for you. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Empathy and 10 steps will turn into a magical partnership. Thank you so much.